Good morning, everyone. In today's video, we are talking about another very important name reaction, which is named as aldol condensation. This is one of the most important reaction belonging to your syllabus. In this series, we are only talking about the important name reactions. Whatever the reaction you want to study next, you can make a comment on this. Let's start aldol condensation. This reaction is really very common in carbonyl compounds. In this reaction, we consider only those aldehydes which contains alpha hydrogen. So aldehydes having alpha hydrogen undergo addition reaction in presence of alkali, which is a strong base, and formation of a adduct or addition product take place, which is technically beta hydroxyaldehyde or ketone and called as aldol condensation. So what is aldol? Aldol is beta hydroxy aldehyde or ketone. On applying some special conditions like heating, that aldol get dehydrated and formation of alpha beta unsaturated aldehyde take place. So let's understand what the reaction is. This is called self aldol sometimes, and we are taking an example of acetaldehyde. This reaction is going on like this. When one mole of acetaldehyde reacts with another, they get fused. Sometimes we use this word for better understanding. Condensation is a special type of addition where some smaller molecules, some simple molecules like water, ammonia, are removed from the point of junction. So initially when acetaldehyde get treated with another molecule of acetaldehyde in presence of alkali, it forms 3-hydroxybutanol, sometimes also called as beta hydroxybutanol, and this is only the compound which is called as aldol. Actually, this word aldol means from ALD and OL. So ALD is coming from, very good, aldehyde, and this OL has come from alcohol. So first of all, we must understand this, that aldol is nothing but a compound which contains both aldehyde and alcoholic group present. The aldehyde group contains neighboring carbon which is marked as alpha carbon, and then the next one is called as beta carbon. So for showing a aldol condensation, this is must that a aldehyde must contain alpha hydrogen atom. This is marked here, and this alpha hydrogen come into play because of the presence of alkali. Okay, let's move. So what is aldol condensation and how it is performed? Let's understand this. First of all, we must identify the presence of alpha hydrogen. So I should write here alpha hydrogen atom must be present in carbonyl compound. How to identify? The important thing is that C double bond O is a carbonyl group, and the carbon beside both the side neighboring carbon are marked as alpha carbons, although the neighboring carbon will also be marked as beta carbon, but they are not important to us.
only the carbon which is important with respect to this reaction is alpha carbon, and the hydrogen atom connected to this alpha carbon are called as alpha hydrogen. They may have more than one alpha hydrogen in the molecule, like in this molecule, whatever I have drawn in front of you. Can you mark the IUPAC name of it? This is definitely propanone, sorry, pentanone 3. The compound drawn is pentanone 3, and it holds 4 alpha hydrogen. Okay, so can you identify the presence or absence of alpha hydrogen, and if alpha hydrogen are present, then how many alpha hydrogen are there? So let's start one by one. There are few compounds I am writing in front of you, and I wish that you should identify and count the number of alpha hydrogen available in them. Let's start with this. First of all, if we count alpha hydrogen in the first one, the CHO group present is the CHO group present is having CO bond available, and carbon neighboring to it is alpha carbon, and that's why there are 3 alpha hydrogen, right? This is the alpha carbon, and the hydrogen attached to that alpha carbon are 2. Here they both are alpha. I am making underline it. They both are alpha, and therefore there are 6 alpha hydrogen available in it. In this case, 2 hydrogen on this side and 2 on this. So total 4 alpha hydrogen are present. 4 alpha hydrogen are present. But in this case, what is it is called benzaldehyde, and benzaldehyde contains alpha carbon but do not contain any alpha hydrogen. The reason is because in case of benzaldehyde, a double bond is present, and because of double bond, all valencies of carbon, which is alpha to CO, are being satisfied. So when we talk about this, we got this carbon as alpha carbon, and you can count all those 1, 2, 3 and 4. Total 4 valency is present. Okay? Because of this, we can say that alpha carbon is present, but alpha hydrogen is not present. If not present, then how can there be possibility of aldol condensation? In this reaction, in this compound formaldehyde, there is no alpha carbon, so no alpha hydrogen. So there also no alpha hydrogen because neighboring carbon is not present. In the later case, uh, when we talk about CH3, CH3, CH3 and CHO. So this carbon is alpha carbon, although very clear, but the important thing is there is no alpha hydrogen at all. That's why we can say that there also no alpha hydrogen is present. Let's understand how to write the product. This is the most important part of this today's video. How to perform aldol condensation. How to perform aldol condensation. We can take an example. First of all, we have to mark one C double bond O, and then in the other molecule we will extract one alpha hydrogen. Is that clear? आपको क्या करना है?
एक एल्डिहाइड ग्रुप है, उससे अल्फा हाइड्रोजन मार्क करके अलग कर लेना है, अल्फा हाइड्रोजन। और एक दूसरी तरफ का जो ग्रुप है उसका सी डबल बॉन्ड ओ एक्सटेंड करके लिख देना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? वी हैव टू जस्ट ब्रिंग दिस सी डबल बॉन्ड ओ इनटू नोटिस, एंड इन अदर मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन OH मीडियम OH माइनस प्रेजेंट होगा। और ये भी OH माइनस कहाँ से हो सकता है? दैट कैन बी फ्रॉम NaOH, दैट कैन बी फ्रॉम KOH, दैट कैन बी फ्रॉम Na2CO3। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे हाइड लाइक दिस, आप बता नहीं पाते हो कि कौन सा है। तो these all are the bases those can produce OH minus ion actually. Okay. Now what to do? You have to do simple addition reaction. Which addition? Simple addition. This H will rush to the oxygen atom and the remaining part will connect from carbon to carbon. बस इतना करना है। ये पूरा वाला पार्ट जो है, दिस होल पार्ट विल गेट कनेक्टेड फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन पे जाकर के क्या होगा? दैट विल फॉर्म, चलिए क्या हुआ? CH3CH, राइट? दैट O इज कन्वर्टेड टू OH। क्लियर है? और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी रिटन लाइक CH2CHO, CH2CHO, and this compound will be having alpha and beta carbon, and on beta position this is having OH. Therefore we can say it is beta hydroxy aldehyde, and such category is only called as aldol, although the name is 3-hydroxybutanol. Okay, hopefully you are able to understand how to write the product. One more important thing, when you heat this minus H2O, and upon heating, due to the presence of this CHO as a electron withdrawing group, इसको हटा देते हैं, another alpha hydrogen is extracted by the neighboring OH in order to give water. CH3 CH double bond CH single bond CHO. The formation will be अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोटन एल्डिहाइड। तो यहाँ क्रोटन एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। व्हाट इट इज? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दिस इज फॉर्म्ड। We can make an arrangement to write down the direct dehydrated product, और उसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए एक टेक्निक है मेरे पास, C डबल बॉन्ड O, और जो नेबरिंग कार्बन है ना उसके दो अल्फा H आप ऐसे बाहर निकाल करके लिख लीजिए, CH सिंगल बॉन्ड CHO। और क्या करना है आपको? OH माइनस के साथ हीट भी दे दिया किसी ने, 1 और 2, और बस बुम, यहाँ से वाटर बाहर कर देना है। और जो रिमेनिंग सब्सटेंस है उसको जोड़ के लिख दीजिए। क्या होगा बताइए जरा? ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। क्या है ये? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। क्लियर है? सी, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस इट। नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट कंपाउंड, और ये आपके लिए वर्क है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और उसका प्रोडक्ट लिख के देखिए। कंपाउंड का स्ट्रक्चर है प्रोपेनोन, यानी कि CH3 CH3 CO CH3। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दो दो तरफ है,
बट वी आर ओनली कीन्ड अबाउट वन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन आपको एक्सटेंड करके लिखना है, बाकी मॉलिक्यूल वैसे ही रहेगा। एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस, वही पुरानी बात जो मैंने अभी आपसे कही, दिस हाइड्रोजन विल मूव टू द ऑक्सीजन, और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका, दैट विल कम टू दी कार्बन एटम। बस ऐसे जोड़ दीजिए, क्या बनेगा बताइए जरा। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं, सी इसके ऊपर OH, जैसे वहाँ लिखा है वैसे ही कॉपी कर दिया, और जो नया बॉन्ड बन रहा है उसको ऐसे लिख दिया, दैट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। बट ऐसे ना, दिस अपीयर्ड लाइक अ हैब्जर्ड वन, तो आप इसको थोड़ा सा आराम से भी लिख सकते हैं, CH3 होल ट्वाइस C, इसके ऊपर एक OH, और आगे CH2 CO CH3। ठीक है, कोई डाउट है? या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा बेहतर लगेगा देखने में भी, CH3C, इसके ऊपर एक OH, और CH3 विल हैंग डाउन, और इसके साथ में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CO CH3। वेरी नाइस। तो अगर आप इस कंपाउंड को हीट करते हो तो क्या होगा, मैंने अभी बोला था डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे होगा ये, डबल बॉन्ड हो, और इसके ऊपर हमने क्या किया, OH माइनस का अटैक कराया, एल्डोल फॉर्म हो गया, और इस एल्डोल को हमने हीट कर दिया। हीट करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा CH3 डबल बॉन्ड CO एंड CH3, बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है। कैसे लिखा है, आइए एक बार समझ लेते हैं कैसे लिखा है मैंने इसको। यहाँ मैं साइड में कर दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि इसको CO और CH3, इसको ऐसे लिख लिया, और इसके सामने जो दूसरा वाला ग्रुप था ना, उसके दो अल्फा H ऐसे निकाल के लिख लीजिए। COCH3 क्या होगा आप बताइए। यहाँ से आपको केवल वाटर बाहर कर देना है, मतलब ये यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, और जो कंपाउंड बचा उसको जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, CH3 COCH3 प्लस अल्फा H विड्रॉ कर लिया। बस फोकस क्लियर होना चाहिए, और उस फोकस के लिए इसका अल्फा हाइड्रोजन, याद रहे अल्फा कार्बन पे होगा, CO के बगल वाला, और यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड हो जहाँ पे रिएक्शन होनी है, दिस विल रश टू दैट, एंड दिस होल ग्रुप विल कनेक्टेड टू दिस कार्बन। क्या बनना है बताओ, CH3 OH CH3, सामने से CH2 CO CH3। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा, और फिर से हमको यहीं इस अल्फा कार्बन से एक H और निकालना पड़ेगा। क्या बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्रो करिए। प्रोडक्ट में साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इसको भी अप्रोच करिएगा, इन दोनों के आंसर्स निकालिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। जो दो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करिएगा, अटेम्प्ट करने के बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।